नमस्कार। Tini Salkha Indigenous Day. Today, United Nations Declaration. Today is the International Day of World Indigenous People. First of all, I would like to thank our organizer, distinguished guests, and all notice my brother and sister, ladies and gentlemen. I feel comfortable to mix our language, multi-language, because I feel there is larger person is we could understand in national tongue. Am I right? Am I right? Yes. Then I will speak in Hindi, my mother tongue Kokborok, and little international language. 1 minute for my state, and 1 minute for Northeast region, and 1 minute indigenous. Only I will take 3 minutes. Thank you all. First of all, who am I? मैं पहली पूछना चाहती हूँ, मैं कौन हूँ? I am a indigenous people from Tripura. My name is Patal Konna Zomatia. ये नाम से इंडिजिनस पीपल का वर्ड आता है, पाताल कोन्ना जमातिया. ये इंडिजिनस वर्ड, is it indigenous word? Yes. 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 Patal Konna Zomatia. Is it indigenous word? Yes. Mixed culture, multicultural, not pure indigenous. हम indigenous कह के proud करते हैं. We feel proud. We are indigenous. But till now, आज तक हम इंडिजिनस प्राउड का साथ साथ इंडिजिनस का काम नहीं करता है हम सब. तो आज के ये दिन का मेन मैसेज arise, unite and fight for our own identity, for our own glory history. This is the message from today. आज इंडिजिनस डे में हम टिपरा का तरफ से प्रेजेंटेशन करूंगा. टिपरा एक डायनेस्टी स्टेट बिफोर मार्च इनटू इंडियन यूनियन बिफोर 15 October 1949. After joining India into Indian Union, we have become minority and microscopy. Whenever we join into Indian Union, that time we are 93%. But today, only 20% below, only 19%. तो पूछना चाहती हूँ, इंडिया में टिपरा का नाम सुनने की बाद टिपरा किधर है, टिपरा कहाँ है, क्वेश्चन एराइज होता है. तो नॉर्थ ईस्ट ब्रदर लोग का पास, नॉर्थ ईस्ट ब्रदर लोग का सामने हम आज पूछना चाहते हो, आप लोग भी टिपरा का नाम याद है या भूल गया? हम लोग नॉर्थ ईस्ट का ब्रदर टिपरा का बात याद है ना भूल गया? याद है. हाँ, अगर याद है तो हम लोग 90% माइनॉरिटी माइक्रोस्कोपी हो गया. आज हम नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल
क्यों त्रिपुरा के लिए वन टाइम भी कहा भी वो मूवमेंट नहीं किया? अगर एक सूटी बहन, अगर एक सुटवाई पूरी तरफ से एक्सटेंशन होने वाला है, तो हम नॉर्थ ईस्ट ब्रदर लोग का फर्ज क्या बनता है? हम यूनाइटेड होना का ही, दिस इज टाइम वी यूनाइटेडली फाइट टुगेदर, वर्क टुगेदर, एंड वी मस्ट विक्ट्री सुन डे। मैं पूछना चाहती हूँ, इन पॉलिटिकली, इन एथनिकली, इन सब ट्राइब, आज का 2018 में आकर हम सब ये सब बोलकर हम इंडिजिनस से सिर्फ ये पहचान में, ये आइडेंटिटी में हम लोग यूनाइट होना चाहिए। अगर नहीं होता तो नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा पीपल जैसा वन डे सबको रिग्रेट होना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करता हूँ आज से नॉर्थ ईस्ट माय ब्रदर एंड सिस्टर त्रिपुरा को कभी नेग्लेक्ट नहीं करेगा, और जहाँ भी हो, स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक्स माय मैडम मोनिका बरुआ। वो जो जेनेमा में भाषण कहती है वो त्रिपुरा का बात कहा है, त्रिपुरा एक्सटेंशन में है। ये बात सुनकर मैं बहुत पीस फील हुआ था, लेकिन इससे काफी नहीं है, हम सब यूनाइटेडली फाइट करना पड़ेगा। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल में हम क्या करना चाहिए? एक इंडिजिनस फोरम अच्छे से स्ट्रॉन्ग, एक यूनाइटेड फोरम बनना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट सर्वाइवल के लिए लड़ना, स्ट्रगल करना, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इसलिए इंडिया गवर्नमेंट का पॉलिसी में थोड़ा सा कंस्पिरेसी को मैं भी शेयर करना चाहती हूँ, जैसा कि जेब्राराम मुसाहरिस्तान में थोड़ा सा बात करना शुरू किया था। नॉट ओनली में इंडिया गवर्नमेंट को कंप्लेन कर रहा है, यूपीए गवर्नमेंट का टाइम में भी हम लोग देखा है, अभी इंडिया गवर्नमेंट का टाइम में भी हम लोग देखा है। इंडिया गवर्नमेंट जितना भी पॉलिसी हो वो नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल के लिए सेफ एंड सिक्योरिटी गारंटी एक भी आज तक नहीं किया। जितना भी एक और जितना भी एग्रीमेंट, जितना भी पॉलिसी आज का इंडिया गवर्नमेंट क्या लेके आया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट और एनआरसी। वन साइड कहा एनआरसी, इलीगल इमाइग्रेंट्स को आइडेंटिफाइड करके डिपोर्ट करना, अच्छा बात है, ये तो इंडिया गवर्नमेंट का फर्स्ट ड्यूटी बनता है। एनआरसी मतलब क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। नेशन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सिटीजन का होना चाहिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस 1951 डिक्लेरेशन क्या है? वही रजिस्टर है। आसाम का सर्ट क्या हुआ? एकॉर्ड किया 1971। ये सिटिंग है या नहीं? ये सिटिंग है या नहीं इंडिया गवर्नमेंट का? ये तो इंदिरा मुझे सुखती, ये आसाम का सुखती, नॉर्थ ईस्ट का सुखती नहीं है। हम क्यों ओवरलैप बार्डन करना जा रहे हैं? और दूसरी बात, त्रिपुरा में चीफ मिनिस्टर बैठ रही है कौन? कौन बैठ रही है चीफ मिनिस्टर? नाउ प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर नेम इज बिप्लब कुमार देव। 1971 की बात आया त्रिपुरा में। इलीगल इमाइग्रेंट्स अभी चीफ मिनिस्टर बन गई हो, इससे पहले में चीफ मिनिस्टर इलीगल इमाइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। क्या चीफ मिनिस्टर? एनडीए गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर। तो इंडिया गवर्नमेंट कह रही हो इलीगल इमाइग्रेंट्स को होता ना, और इलीगल इमाइग्रेंट्स हिंदू बांग्लादेशी को बैठ रहा है कहाँ पे? त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर। ये इंडिया गवर्नमेंट का ये क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या पॉलिसी है? और कह रही है सुनील देवधर ऑब्जर्वर जो इंडिया गवर्नमेंट बीजेपी का, वो कह रही है ट्राइबल नॉन ट्राइबल मिलकर जुड़कर रहना होगा त्रिपुरा में, एनआरसी नहीं चाहिए। ये क्या बात है? एवरी स्टेट में एनआरसी मांग कर रहा है पॉलिटिकल फायदा लौटने के लिए।
एनडीए गवर्नमेंट खोट का पार्टी और टीपरा में खोट बांग्लादेश को चीफ मिनिस्टर बैठा कर कह रही है वहां पे एनआरसी नहीं चाहिए। इंडिया गवर्नमेंट का कॉन्स्पिरेसी को हम लोग पकड़ना चाहिए ना, नहीं चाहिए? नॉर्थ ईस्ट रीजन का इंडिजिनस पीपल हो, ये दिन आ रही है। अगर नहीं सकते तो, अगर फाइट नहीं करते तो टीपरा जैसा हम एक दिन सब खोजेगा। इसलिए आज ये भाई बहनों, हम यूनाइटेडली फाइट करेगा, लड़ेगा और हम सक्सेस करेंगे ही करेगा। इंडिजिनस पीपल को कोई रोक नहीं सकेगा। अगर हम अबॉयस करता तो हम लोग का हक है। नो वन snatch our rights, but we should united. इसलिए हम कहना चाहती हूँ, नॉर्थ ईस्ट पीपल आज ही प्रॉमिस करना पड़ेगा। ऑल इंडिजिनस पीपल, जितने भी पॉलिटिकल कंस्पिरेसी, हम यूनाइटेडली फाइट करना है, प्रोटेस्ट करना है और सेफ एंड सिक्योरिटी गारंटी देना है नॉर्थ ईस्ट रीजन इंडिजिनस पीपल। थैंक यू ऑल। Whenever it was necessary or possible. In that protest, in that process, the northeast people of India, who are surrounding the Naga lands and the Naga areas, we must have hurt you so many times. We must have made you very angry. We must have made you hate the Nagas. We, yes, in some meetings, we have heard openly some people saying that the Naga poison has come to this state, that state, that. For all those which we have hurt you without meaning to, but in order to survive, I want to ask apology. I want to say sorry to our neighbors for hurting you in the past. I want to ask you to forgive us. But whether we like each other or not, whether we hate each other or not, we're indigenous people of this part of the region. Nagas are part of the northeast region, and Nagas are also part of Burma. And Nagas have to fight everywhere. So we're sometimes very angry people, we're very hateful people. But we don't want to surrender to circumstances. So though we're very small people, we keep on fighting. So for the last 21 years, there has been a ceasefire, there has been a peace process, there has been political negotiations. In these 21 years of political negotiation, Government of India in 2002 recognized the unity. They have signed a framework agreement, which everybody is talking in Northeast India. And because the contents are not disclosed, there is all kinds of suspicion. And our neighboring states are also angry for not disclosing these contents. But I must be honest and to say that it is not the Nagas who are hiding the contents of the framework agreement. But it's the government of India who insists that we cannot disclose because we have to honor agreements which are meant to be kept as confidential agreements. That is one of the problems. And we don't know tomorrow what will come. Some good things may happen, some bad things may happen. But something is bound to happen sooner or later. And Naga people, especially the younger people, who are brought even after the post-ceasefire agreement, the younger generations, they know something is going on, but nothing is happening. And there is all kinds of suspicion, there's all kinds of division in the Naga society because of this suspicion. So the younger generation are completely becoming fed up. They are becoming intolerant, they are becoming restless. So in that process, if the ceasefire agreement Indigenous peoples,
how indigenous are we really, is a question that I want to ask today. If given the opportunity, how many of us will jump at the chance to move to metropolitan cities rather than go back to our cities? Our minds, our souls, if not bodily, but at least our minds, our souls, they have to migrate back from urban areas to the rural areas. This is the thing that I want to bring today, especially among indigenous leaders. I think so many times that we are indigenous nonetheless, but we have our cars, we have our mobiles, we have our TVs, we have our buildings, we have everything. But somehow, many of us have started to forget who we are and where we are from. Many of us have forgotten that. So this is something that I find so very serious. I speak in Mar. I speak among my people in Mar, but they can't understand what I'm saying anymore. They can't understand me anymore. And I am supposed to be working with those people, with my people, but they can't understand me. How many of us have experienced that? I feel that it's so very important to realize anew, to reconnect with our past. People say, there are some people who say indigenous peoples have no history because we don't have written history. But I say today, I declare, the history of India starts with the indigenous people itself. India's history is of the indigenous peoples themselves. When the Aryans came to India, the first people they met were the indigenous peoples there. So I say that India exists because of the indigenous people, and it will continue to exist because of the indigenous peoples. And I want to make this request once more, that all the leaders here, let us dare to walk the extra mile. Let us come back to our roots, like Brother Jebra Musahari has gone back to his roots. Let us go back to our roots. We may not necessarily go and live back in the village, but we can reconnect with our past. Because wisdom lies not in the books that we read actually. Wisdom, real wisdom lies with our forefathers, what they have gathered. Let us try to get back those again. And then, only then, indigenous leaders, me included, our people will start to understand what we are trying to tell them. We are disconnected from them. Let us reconnect with them. And then in that, only there lies the future of the indigenous peoples. Thank you so much, Kalome. We choose this land by choice, we have chosen this region by choice, and we have stayed back in this land for not less than 1,000 years old. And it is our pride that we have managed to survive amidst the landscape, which I usually believe that the ancient landscape, the prehistoric landscape here was rough and tough. The terrain was difficult, and hence it is our pride that our ancestors have been able to roam language, traditional knowledge system, belief system, possess valuable knowledge of practices for sustainable management of natural resources, and have a special relation to the use of their traditional land, and hence ancestral lands become conspicuous to the traditional people, to the indigenous people. However, in modern political discourse, modern political discussion, we tend to see indigenous people as those who lack political representation, people who lack political participation, people who are economically marginalized, people who suffer highest form of poverty, lack of access to social activities, and discrimination. But despite these cultural differences of all the indigenous people worldwide or in our region, the one thing that we share in common is the problems that was mentioned above. Owing to this problem, most of the indigenous people recognition of their identities, their ways of life, and the rights of traditional lands, territories,
at natural sources. This is a common factor that binds all the indigenous people, be it in India, be it in Northeast India, or be it anywhere in the world. We are, however, more privileged than many of the indigenous people around the world. And I should thank our own brothers and sisters of Northeast India, the indigenous people of Northeast India, who have been able to wrest themselves from the onslaught of migrants, who have actually forced themselves against all odds to retain their identity. So out of the 3.47 million people of Meghalaya, 80 to 85% are the indigenous tribals or indigenous communities, for which the highest will be the Khasi, followed by the Garo, and then by the Jantia people. So the demographic profile of 80 to 85% of indigenous people of Meghalaya somehow showed a very encouraging picture, which somehow suggests that the indigenous people of the state are very well protected by the national government policies. However, the picture is far from reality,